Good evening, friends, and Hare Krishna. I am Vimal Dolly, and on behalf of Safe Invest family, I welcome you all on this Safe Talk session. Safe Talk session objective यही है कि every time we try to bring and simplify the concepts of the financial world. And today's session is also to simplify the same objective, and the objective is the concept of SIP. Now, I'm sure everybody knows what is SIP, but I assure you, friends, there is a lot more to understand in the concept of SIP. But usse pehle, I have a small announcement to make. Uh, I'm proud to announce that Safe Invest is completing 20 years on 1st of April 2023. And I thank all the investors who have shown their trust and belief in us. Just to share a few facts of Safe Invest. Safe Invest की शुरुआत जो हुई थी वो 2003 में हुई थी, and the founder is our dynamic leader Mr. Vishal Merchant, and who is in itself is a very disciplined and professional in his own nature. Safe Invest prides itself on being a professionally managed and quality focused and customer centric organization. We at Safe Invest are hard of the benefits of technology, and with the use of the same, we manage our clients' investments easily and consistently as well. Another few facts to share. We are managing close to 1600 crore plus of assets under management. We have 7,600 active investors. We have 3,800 SIP investors. We have 14,000 plus live SIP accounts, and we have around 2,600 PMS and Mars investors with us. We are located in Surat and Baroda as well. So I thank all my investors who have shared their unbroken trust and belief in us. Apart from Pan India, we are also catering to clients outside India, especially in Australia, Canada, New Zealand, Singapore, UK, US, and many other countries. I thank you once again for showing the trust in us. So let me just proceed with the session. I would like to introduce to you a very experienced and expert speaker. Let me just welcome Mr. Ashish Somaya. Good evening, sir. Yeah, hi, good evening. Welcome to the session. But before I proceed, let me just share a few details of Ashish sir. Ashish sir is the CEO at White Oak Capital Asset Management Limited. He is responsible for strategizing, growing, and managing the operations at White Oak Capital, a highly differentiated equity boutique managing offshore funds investing into India, as well as domestic AIF and PMS strategies totaling over 2 billion US dollars. White Oak Capital is founded by Mr. Prashant Khemka, the former CIO at Goldman Sachs Asset Management. Mr. Ashish, prior to joining White Oak Capital, served for nearly 8 years as a managing director and CEO at Motilal Oswal Asset Management Company, one of the highly regarded and differentiated boutique equity managers in India, backed by excellent performance track record and well-documented investment philosophy. Mr. Ashish has over 20 years of experience in business strategy and management process, development and marketing of investment offerings. He has been engaged with India's private sector asset management industry for pretty much its entire growth trajectory post 1998. Prior to Motilal Oswal AMC, Mr. Ashish was heading sales and distribution of ICICI Pru Asset Management Company for their mutual fund, PMS, and real estate offerings through multiple distribution channels across India and Middle East.
He has led new product development management, product management, communication and distribution channel delivery over a number of years. Mr. Ashish holds a Bachelor of Engineering in Polymer Science from Pune University and a Master's in Management Studies in Finance from NMIS Mumbai University. So let me just, I'll not take much of your time and hand over the session to Mr. Ashish. Sir, over to you. Thank you very much, Vimal bhai. And I want to thank all the esteemed clients and investors of Safe Invest for giving me the opportunity. Especially thanks to Vishal bhai, the founder of Safe Invest, for inviting me and for fixing this session. So, like Vimal has already said, जैसा विमल ने already बताया है, आज का डिस्कशन हम लोग SIP के बारे में करने वाले हैं. लेकिन SIP, I think everybody understand what is the meaning of SIP. इसमें there is nothing new. You might think that every month in India, some 5 crore people are putting money into their SIP folios. It is over 13,000 crores every month that is being invested in SIP. इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट है SIP का. तो अब जाके 2023 के साल में इतने साल गुजर गए, इसके बाद हम SIP के बारे में ऐसा नया क्या चीज बोलने वाले हैं. So definitely that is something. So we are not going to talk the basic things about SIP. Everybody understands that SIP is systematic investment plan. And all of us, we have some monthly income, we have some monthly expense. और अगर हम सही सही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और अगर हमारे में थोड़ा भी डिसिप्लिन है, तो our income will be little bit more than our expense and we will not spend everything. और इनकम में से एक्सपेंस निकाल के जो पैसा बचेगा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 20-30 साल पहले जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स बैंक्स में रिकरिंग डिपॉजिट करते थे. लेकिन पिछले 20-25 साल में क्या हुआ है कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट काफ़ी घट गए हैं. इंटरेस्ट रेट या एफडीज जो है वो मुश्किल से इन्फ्लेशन को बीट करती है. सो ओवर द नंबर ऑफ इयर्स लोगों को समझ में आ गया कि इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए और हर महीने इन्वेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन पहले लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते थे. अभी लोग रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस के बजाय नाउअडेज पीपल आर डूइंग SIP. सो what was recurring deposit and your postal deposit, that has become your SIP into mutual fund, because every month income minus expense, whatever you're saving or investing, that you're doing SIP. And if you're saving or investing every month and you're doing it for long term, then equity mutual fund is the best way, because over the long term equity mutual funds will give much better returns compared to any fixed deposit or post office or any bank deposit. So why to do SIP? Why SIP in equity mutual fund? ये सब सबको पता है. So these are what the basic things are. We are not going to discuss about this. We are going to discuss today about SIP as it applies, और जो आज के तारीख में डिस्कशन करने के लिए रेलेवेंट है उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे. और क्योंकि मैं सेफ इन्वेस्ट के टीम को मिलता हूँ, विशाल भाई को मिलता हूँ, विमल भाई को मिलता हूँ, and I meet so many investors all over the country, I know that आज के तारीख में अगर SIP की बात करें तो थोड़ा थोड़ा लोग धीरे धीरे शायद डीमोटिवेट हो रहे होंगे, because in the last 18 months, see today Nifty has closed 17,150, approximately 17,150 Nifty has closed. अगर आप 18 महीने पहले देखें, say for example you go to September October 2021, that was 18 months back. 18 महीने पहले निफ्टी ने न्यू हाई बनाया था 18,400. उसके बाद US, यूक्रेन, so many things have happened. मई 2022 में तो निफ्टी का लेवल 15,200 था. उसके बाद नवंबर 2022 में आप आइए, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, निफ्टी लेवल वाज 18,900. So 18,400, 15,200, again 18,900, today again 17,150. So in the last 1.5 years, what has happened is that market has kept going up and down,
एंड अगर आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड देखेंगे पिछले 1.5 साल से, तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू में कोई चेंज ज़्यादा है नहीं। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा भी किया है, उसमें वैल्यू में चेंज है, बट वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो समझो कि ऑयल, मेटल, एनर्जी, कमोडिटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज में नहीं थे। और 2022 में जो चला है वो उसके पहले 7-8 साल नहीं चल रहा था। So 2022 has been a challenging year on multiple fronts. It has been a challenging year because last 1.5 year, your SIP has not given very high return. Last 1.5 year, index has gone up and down, but it has been in the same range. So ऐसे माहौल में क्या होता है कि लोग थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये SIP कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, let us stop it for some time, we will restart when the market goes up, we are not getting returns, अभी ये पैसा FD में डाल देते तो 6-7% मिलता, क्यों हम लोग SIP में रुके हैं, रिटर्न तो बन नहीं रहा है. So what happens is that if for one or 2 years, if market is range bound, if your SIP value keep going up and down but there is no change, then people start questioning कि हम ये कर क्यों रहे हैं, people start becoming demotivated. So these are the points we are going to discuss today, that what should you do with your SIPs when market is behaving like this, when you are feeling demotivated, and when you are not being rewarded as per your expectation. So you know that SIP is systematic investment plan, but do you know that in when I say in my company, which is in White Oak, do you know what we call SIP? I'll just show you a simple example of that. In my company, we are calling SIP. If you see here on the top, what it says, stay in play. SIP. Everybody knows SIP is systematic investment plan. But what I have written here for SIP, I have not written systematic investment plan. I have written SIP as stay in play. And I have shown here two batsmen. What are they doing? They are taking one run. What is the reason why we are showing this? So I will stop sharing the screen again and let me just explain some very, very basic things to you. अभी तो वैसे भी क्रिकेट का सीजन चल रहा है और बैक टू बैक आप टेस्ट मैचेस आपने देखे होंगे, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड. एंड इन दिस पर्टिकुलर क्रिकेट सीजन यू मस्ट हैव सीन, जैसे इंदौर का विकेट था या जहां पे भी क्रिकेट खेला गया है, समझो कभी कभी चेन्नई में होता है. Whenever in India, what happens, sometime there is a low scoring match, right? The pitch is turning a lot, spinners are ruling the day, batsmen are finding it very difficult to stick on the pitch, and low scoring test match होता है कभी कभी. तो पिच जब बहुत खराब होता है और लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन चले गए, चौथे दिन पे 4th इनिंग्स चल रहा है, खाली 5 विकेट है हाथ में, और जो 4th इनिंग्स खेल रहा है उसको 150 रन चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज दैट 3 days are over, 3 innings are over, 4th inning is there, and only 5 wickets are in hand, and with those 5 wickets in a slow wicket, in a turning wicket, on the last innings you have to make 150 runs. Now, if you follow cricket, you must have seen what the commentator will say in this kind of scenario. What does the commentator say for such a low scoring match with very less wickets in hand? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पिच पे रहेगा तो जीत जाएगा. Means if you don't lose your wicket, you will win. If you stay on the pitch, you will actually win. जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, even in one day matches, देर इज अ लो स्कोरिंग मैच. फर्स्ट जिसका बैटिंग है उसने 50 ओवर नहीं खेला, 35 ओवर्स में ऑल आउट हो गया, एंड दे मेक ओनली 140 रन्स. सो 141 टू विन. स्लो पिच, डिफिकल्ट पिच, 140 रन्स टू विन. नाउ द सेकेंड टीम कम्स फॉर बैटिंग, दे स्टार्ट बैटिंग. So what does the commentator say for such a low scoring match? They say the same thing, that if you play 50 overs, you will win. सो कभी कभी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, क्रिकेट में खास करके ऐसा होता है कि चौके छक्के लगाने का बात नहीं है. जब पिच डिफिकल्ट है,
मैच में रन बनाना मुश्किल हो रहा है. So what does the commentary say? They say that if you bat for 50 overs or if you stay on the pitch, you will win. Now this also applies to stock market and your SIP. SIP अगर आप 10-10 साल के लिए करते हैं तो 10 साल में तो 14, 15, 16% कंपाउंडेड रिटर्न आया है लोगों का और आता भी है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो पहले 2-3 साल रिटर्न नहीं बनता है, फिर 2-3 साल रिटर्न बनता है, फिर 2-3 साल नहीं बनता है. सो अभी कौन से साल में बनेगा और कौन से साल में नहीं बनेगा, ये सोच के हम पहले से एग्जिट कर देंगे तो अच्छे साल भी हमारे से निकल जाएंगे. So lot of times, if it is a tough match, if it is a turning pitch, it is low scoring match, all the people who follow cricket, they must have seen. It is said that if you bat 50 overs, you will win. Or if you just stay on the pitch on the last day, you will win. अब क्या है कि lot of people don't necessarily love cricket. Sports का ही अगर example लेते हैं, there is another sport which is equally or maybe sometimes niche but widely followed, which is lawn tennis. अब जितने लोग भी ये विंबलडन, यूएस ओपन ये सब देखते हैं या टेनिस खेलते हैं प्रोफेशनल लेवल या क्लब लेवल पे, तो ये सब टूर्नामेंट में टेनिस में एक खास बात है. टेनिस इज द ओनली स्पोर्ट जहां पे एक अलग से स्टेटिस्टिक दिया जाता है. वो स्टेटिस्टिक लिखा जाता है अनफोर्स्ड एरर्स. जैसे मैंने काफी टेनिस खेला है तो मैं जानता हूँ टेनिस इज अ वेरी टफ स्पोर्ट. इट्स अ वेरी वेरी बिग कोर्ट. इट नीड्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इट नीड्स लॉट ऑफ स्टैमिना. So you are continuously running on a very big court and it needs a lot of strength to keep hitting the ball. तो टेनिस ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें अगर आप एग्रेसिव खेलेंगे तो आपकी गलतियां हो सकती हैं. So in tennis also it is said that if you keep the ball in the court, you will win. That is why they report something called unforced errors. Meaning जो winning shot मारने की ट्राई करता है, जो winners मारने की ट्राई करता है या सर्विस करने के टाइम एस मारने की ट्राई करता है, the people who try to hit winners, they are more likely to make mistakes, whereas the people who play safe and every time the ball comes to them, their concern is only to return the ball and make sure it falls inside the court. So in tennis, by the way, it is a well-known strategy that you will win if you don't make mistakes. So what do they say? Keep the ball in the court and you will win. So same way, when you invest in equity, when you are doing SIP, every year you don't make return. Sometimes there is a tough match. Sometimes there is a tough opponent. Sometimes the pitch is bad. Sometimes the track is turning a lot. Sometimes it is bouncing a lot. The way to win is to remain invested and to continue your SIP. The way to win is stay in play. The way to win, play 50 overs, don't lose your wicket. The way to win is stay on the pitch. The way to win is keep the ball in the court. अगर गेम में रहेंगे तो जीतेंगे. थोड़े टाइम रिटर्न नहीं बना तो गेम छोड़ के निकल जाएंगे तो वापस नहीं आ सकेंगे. So this is what is the simple thing that you should keep in mind. Now it is, I mentioned something that nowadays what is happening is that people who have done SIPs for the last 12 to 18 months, they are not seeing any returns, and sometimes when people don't make returns, they feel very very demotivated. लेकिन आपको, I don't know if you know this or not, if you don't make returns does not mean nothing is happening in the market. So let me give you a very very simple example. 18 months back निफ्टी का लेवल 18,000 के आसपास था. आज भी 18,000 के आसपास निफ्टी घूमता है. कभी 17,000, कभी 18,900, कभी 18,000, कभी नीचे, कभी ऊपर. Now let me give a simple example. Two examples I will give you. पहले जैसा मैंने क्रिकेट और टेनिस से एग्जांपल दिया, तो वैसे ही रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. Let us say that 18 months back Nifty was 18,000. Today also it is going around 18,000. Sensex was 60,000. कई लोग निफ्टी नहीं देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं. तो 1.5 साल पहले सेंसेक्स 60,000 पे था. आज भी सेंसेक्स 60,000 प्लस माइनस के लेवल में घूम रहा है. तो जस्ट बिकॉज सेंसेक्स इज गोइंग अराउंड 60,000 और जस्ट बिकॉज निफ्टी इज कंटिन्यूसली गोइंग अराउंड 18,000, डज इट मीन कि बाजार में कुछ नहीं हो रहा है?
तो जब ये इंडेक्स चेंज नहीं होता है तब एक्चुअली होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. So now you will be able to see a slide on the projector, correct? And on this slide you can see two, ऊपर एक डेटा है, टेबल है राइट हैंड साइड में जहाँ पे मैंने रेड कलर का सर्कल डाला है, और नीचे एक डेटा है. तो ऊपर 5 साल ऊपर आप देखिए, जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2023 3 साल का डेटा है. और आप नीचे देखिए अक्टूबर 21 से लेके 31 जनवरी 2023, ये 17-18 मंथ्स का डेटा है. और मैंने आपको बोला कि 17-18 मंथ्स मतलब अक्टूबर 2021 में निफ्टी 60,000, सॉरी सेंसेक्स 59,000 पे था. 31 जनवरी को भी सेंसेक्स 59,000 के पास था. तो अभी ये दोनों डेटा को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं. तो पहले आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है. 31 जनवरी 2020, 31 January 2023. In these 3 years, Sensex has gone from 40,723, Sensex has gone to nearly 60,000. तो 3 साल में Sensex में कितना बढ़त हुआ? Sensex has gone up by 46% in the last 3 years, which is not a very high number, but not a very bad number, because 3 years 46%, it must be 14, 15, 13, 14% compounded return, maybe 14% compounded. Then you see, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी हम देखते हैं तो हम बोलते हैं ना बार बार के प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट. सो व्हेन यू बाय सेंसेक्स कंपनीज, व्हेन यू बाय निफ्टी कंपनीज, व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव? यू आर गोइंग टू गेट पार्टिसिपेशन इन द अर्निंग्स ऑफ दोस कंपनीज. तो रोज हम लोग टीवी में और अखबार में सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं, बट सेंसेक्स या निफ्टी खरीदने से हमको क्या मिलता है? उसके अंदर की जो कंपनियां हैं उसके प्रॉफिट का हम हिस्सेदार बनते हैं. दैट इज हाउ यू आर सपोज टू गेट द रिटर्न्स. तो पिछले 3 साल में सेंसेक्स में तो 46% का ग्रोथ है, लेकिन सेंसेक्स का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 72% का ग्रोथ है. और सेंसेक्स महंगा है या सस्ता है तो उसके लिए लोग क्या देखते हैं? पी मल्टीपल देखते हैं. सो व्हेन सेंसेक्स हैज गॉन अप 46%, the earnings of Sensex companies has actually gone up 72%, and the Sensex has become 15% cheaper. Okay? तो ये तो पिछले 3 साल का हो गया. लेकिन पिछले 3 साल में सेंसेक्स में 46% ग्रोथ भी है, तो अर्निंग ठीक है, कभी आगे कभी पीछे, कोई बात नहीं. लेकिन आप पिछले 3 साल को छोड़िए, नाउ यू लुक एट लास्ट 18 मंथ्स, और आज तो सेंसेक्स इससे भी नीचे है. तो 31st October 2021, Sensex was at 59,000. 31st January 2023, again 59,000. तो ये 1.5 साल में सेंसेक्स में कितना चेंज हुआ? जीरो, नो चेंज. लेकिन ये 1.5 साल में जब आपने सुना देयर इज अ वॉर इन यूक्रेन, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप इन यूएस, इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप इन इंडिया, सम बैंक हैज डिफॉल्टेड इन यूएस, ऑल दिस थिंग्स यू आर हियरिंग. तो इससे क्या इंडिया में कंपनियों का या आर्थिक व्यवस्था का कोई नुकसान हुआ है? सी व्हाट हैज हैपेंड इन 1.5 years. सेंसेक्स डिड नॉट चेंज, बट द अर्निंग्स ऑफ सेंसेक्स कंपनीज हैज गॉन अप बाय 26%, एंड सेंसेक्स हैज बिकम 20% चीपर. तो इसको मैं आपको, बहुत सारे आंकड़े हो गए, ये डेटा को मैं आपको आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल वे. इफ आई टेल यू in October 2021 you will get one packet of biscuit for 10 rupees, and that packet has 5 biscuits. Now I am telling you packet of biscuit is 10 rupees, but instead of 5 you will get 6 or 7 biscuits. So क्या होगा? आपको लगेगा कि 10 रुपए का पैकेट 10 रुपए का है, लेकिन हकीकत क्या है कि 20% ज्यादा बिस्किट मिलेगा आपको सेम 10 रुपया देने से. सी हाउ दिस अरिथमेटिक वर्क्स. फर्स्ट द पैकेट वाज 10 rupees, इट हैड 5 बिस्किट्स. इफ आई कम एंड टेल यू दैट 10 रुपया नहीं, अभी 8 रुपया में मिलता है, 20% डिस्काउंट है, तो सबको तुरंत समझ में आएगा कि 10 का चीज 8 रुपए का हो गया, सस्ता हो गया. लेकिन यहां पे 10 का चीज 8 का नहीं हुआ है, आपको 5 के बजाय 6 बिस्किट दिया जा रहा है. Net effect is the same. Instead of 10 rupees, if you pay 8 rupees, it is 20% discount. But instead of 10 rupees, if you keep paying 10 rupees,
And instead of 5 biscuit, I give you 6 biscuit. That is also 20% discount. So I think what is happening is that market is 20% cheaper than where it was 18 months back. People are not realizing. तो आपका एस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपको एस में यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, बिस्किट्स ज़्यादा मिल रहे हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी शुड नॉट फॉरगेट. अच्छा, ये तो सेंसेक्स और निफ्टी का मैंने बात किया. अभी हम लोग, जैसे मैं व्हाइट ओक से हूँ, तो हम लोग तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वगैरह चलाते हैं, तो हम लोग पी मल्टीपल नहीं देखते हैं. पी मल्टीपल तो अर्निंग्स पर शेयर देखता है कंपनी का. वो अर्निंग पर शेयर में कंपनी का प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ईसॉप कॉस्ट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, तो हम सब जानते हैं कि ईपीएस जो होता है दैट इज नॉट एक्चुअली द कैश प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो व्हाइट ओक में तो हम लोग कैश देखते हैं, कैश प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना है, खाली ईपीएस या पैट नहीं देखते हैं. नाउ इफ आई सी कैश प्रॉफिट, तो पी मल्टीपल पे अगर आप इंडेक्स देखते हैं तो इट इज 20% चीपर. But instead of PE multiple, if I just see free cash flow multiple, it is 32% cheaper. Our portfolio in last 18 months, जैसे हम लोग PMS चलाते हैं, म्यूचुअल फंड चलाते हैं, हमारा भी NAV चेंज नहीं हुआ है लास्ट 18 months से. But even when NAV is not changed, our portfolio has become 32% cheaper. So with this, I'm going to stop sharing the screen. What I want to explain to you in simple words is that देर इज अ बिग करेक्शन इन द मार्केट. देखिए क्या होता है, अगर मार्केट में 30% करेक्शन होगा तो सब सोचेंगे अरे अभी पैसा लगाना चाहिए क्या, शुड वी इन्वेस्ट नाउ. इफ मार्केट फॉल्स बाय 30%, एवरीबडी will pay lot of attention to it. But if market has not fallen and earnings and cash flow has gone up, that is also a big correction, but people don't seem to be noticing it. So इसके वजह से क्या हुआ है that while the returns are not coming in last 12 to 18 months, we should not only continue our SIP, we should be increasing the SIP. And when SIP does not give you returns, अगर आपने समझो पिछले 2 साल में SIP स्टार्ट किया है, till now you have not got any returns. Okay, is it a good thing or a bad thing? Of course, कोई भी बोलेगा अरे बॉस 2 साल से SIP चालू किया है, अभी तक रिटर्न नहीं आया है, तो उसमें गुड क्या है, वो तो बैड है. बट यू हैव नॉट डन SIP फॉर 2 years. You may have done SIP for next 10 years. It may have been done for your future planning. Correct? Now, when you have done SIP for next 10 years, I just want to share one important piece of data with you. First thing, always remember that when you do an SIP, the volatility actually helps you. So I am putting the screen again out here, and you will be able to see this. So if you see the first graph, there is a person who is continuously doing SIP in the first graph. So what it says, every month, every year, the NAV keeps going up. You keep doing SIP, let us say you get 12% return. XIRR 12%. Take second scenario. You keep doing SIP, but in between there is one correction, big fall, and then again it starts to go up. So instead of, if it goes up in a straight line, it shows 12% IRR. If it falls once, one big correction, because whenever there is a correction in this period, you keep getting units for cheaper and cheaper value. When it bounces back, you get a big appreciation. So if there is no correction, let's say you get 12% IRR. In between, if there is one correction, it increases your return to 14% IRR. But if there are multiple corrections, 13 का 7, फिर 13, 22, 25, फिर down, फिर up, if there are multiple corrections, the return is actually higher. So एक बहुत जमाने पहले एक साबुन का ऐड आता था, उसमें लिखा था दाग अच्छे हैं. तो दाग अच्छे हैं, उसका सेम लॉजिक है that if you are doing SIP, volatility is your friend. Volatility is not your enemy. So first of all, when you do SIP, don't get demotivated because the value is going down. Whenever the value goes down, you benefit because you get more units, and at lower level, lot of your money will get deployed at a lower level, and when it goes up, उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा. Let me explain this. Now, what this shows is that if you have done 10-year SIP, what it shows, if you have done a 10-year SIP, if you're a long-term investor,
A slow start is a good start. See what it is showing. ये हमने assume किया है कोई म्यूचुअल फंड नहीं है. We have just taken Sensex and we have assumed that somebody is doing SIP in Sensex for 10 years. And then you think कि भाई जिसने 10 साल किया है तो समझो कि पहले 5 साल में the return is very bad. Now what this data actually shows, if you see the black line, it shows what is the return of the SIP in the first 5 years. So let us say, if somebody has started in 1996 and in August 2001 they are seeing, then 1996 में जिसने SIP चालू किया ना, उसका 5-year return negative था. That is where this black line is showing. But 10-year return more than 20%. जिसने 1998 में SIP स्टार्ट किया, उसका आप देखिए 2003 में यहाँ पे 5-year return negative, 10-year return more than 20%. अच्छा, अभी उल्टा देखते हैं. जिसने 2002 में SIP स्टार्ट किया, उसका 2007 आते आते 5-year रिटर्न था, SIP का रिटर्न 40% कंपाउंडेड. लेकिन उसी पर्सन का अगर आप 10-year रिटर्न देखेंगे 2017 आते आते, तो इट बिकम्स 2012 आते आते it becomes 10 to 12% compounded. So what you should keep in mind, actually what it shows, whenever the average SIP return in 5 years, मतलब समझो 10 साल का SIP सब लोग करते हैं, पहले 5 साल में अगर 8 से कम आया तो 10 साल में उसका एवरेज रिटर्न 18.7% होता है. और जिसको भी पहले 5 साल में 8 से ज्यादा आया, उसको 10 साल में 15% रिटर्न मिलता है. सो what it means, आज के तारीख में people who have started the SIP, they are feeling demotivated कि भाई पिछले 2 साल में तो हमारा कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है. But what does the actual data show? The actual data shows that people who get less return in the early part of the SIP, what it means that lot of money has been invested when market is low. In the later part, when market actually goes up, you will end up making a much higher return. So actually for a SIP, a slow start is a good start. That is why we have written here, periods when SIP which comparatively delivered less return in initial 5 years, on average deliver higher return on completion of 10 years. So अभी पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं आया तो डीमोटिवेट नहीं होना है. इनफैक्ट आपको प्रे करना चाहिए कि भाई और 2 साल मार्केट नहीं चले तो मेरा पूरा पैसा लग जाए और तीसरे चौथे साल से मार्केट ऊपर जाए तो एक साथ पूरे पैसे पे मुझे अप्रिसिएशन मिले. सो ऐसा एक बहुत फेमस कहावत भी है. आई डोंट नो अबाउट शायरी, बट देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट कि जो मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि अपने मन का नहीं होता है तो ऊपर वाले के मन का होता है. So I think this is something which is very, very important thing to really keep in mind. You must not only continue with your SIP. Actually, the data shows कि अगर पहले 5 साल में कम रिटर्न आया तो आगे जाके बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा. So this is a time not only to do SIP but to actually double up and try to see how you can save more and more. I think this is very, very important data. Please read it carefully and speak to our colleagues in Safe Invest. They can guide you more. बट ये टाइम SIP को रोकने का या डीमोटिवेट होने का नहीं है. दिस इज एक्चुअली अ टाइम वेयर यू शुड बी विलिंग टू कमिट अ लॉट मोर एंड देन यू शुड बी seeing how it plays out. Now there is few other important data what I want to share with you. Lot of times what is happening is that people are also thinking कि SIP कौन से तारीख का करना चाहिए, 1 तारीख को करना चाहिए, 2 तारीख को करना चाहिए, 5 तारीख को करना चाहिए. All these kind of questions are also coming. So we have prepared more interesting data for you, which I'm going to share with you right now. So first and most important thing, कि मेरा तनख्वाह 1 तारीख को आता है, मैं SIP कौन से तारीख को करूं. All this is waste of time. Please don't analyze too much. We have done enough analysis which says that कौन से डे पे आप SIP रजिस्टर करते हो. तो हमने सेंसेक्स का पूरा डेटा देखा है एंड वी हैव सीन इन 26 years कि अगर आप 10 साल का SIP करते हो तो 10 साल का SIP जब आप करते हो, कौन से दिन पे चालू करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 तारीख को चालू करते तो 15.77 आता, 9 तारीख को चालू करते तो 15.68 आता,
17 को करते तो 15.74 आता, 23 को करते तो 15.76 आता, लेकिन आप देखिए कोई चेंज नहीं है. Any date you do SIP, 15.6, 15.7, there is absolutely no difference. So first thing, don't waste your time in analyzing which date to pick. The date you get money, that is the date you should actually do it. Second important point, daily SIP करना है, weekly SIP करना है, monthly SIP करना है. Again, complete waste of time. If you are a long-term investor, it makes no difference. और हम लोग कोई 6 महीने 3 महीने के लिए SIP करते नहीं है. We don't do SIP for 3 months or 6 months. So basically, starting a SIP early and running it for long term is more important than trying to decide whether you should do weekly SIP or monthly SIP. It doesn't help at all. You do SIP whatever is convenient to you. It will not change anything. The third thing which people ask, should I do timing? SIP क्यों करना है? हमारे पास हर महीने पैसा है, हम ही लोग देखेंगे मार्केट कब सस्ता है, मार्केट कब महंगा है, और हर महीने हम खुद अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देंगे. So if you pick the best day of the month, you might get 14.6. If you pick the worst day of the month, you might get 14. और अगर आप अंधे में कुछ डिसाइड नहीं करते, यू जस्ट से अरे यार हर महीने का 15 तारीख को कर दो, ये सब देखने का नहीं है, तो यू विल गेट 14.3. सो देर इज एक्चुअली नो डिफरेंस विच डे यू पिक, एंड देर इज नो डिफरेंस विच फ्रीक्वेंसी यू पिक. और अगर आप मैन्युअली SIP करेंगे खुद टाइमिंग करके, दैट ऑल्सो इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी मैनर. The other important thing which people keep thinking, should you do large cap, should you do mid cap, or should you do small cap? Yes, definitely. इसमें आप देखेंगे, आपको दिखेगा, हमने यहाँ पे लिखा है एवरेज रिटर्न. The best part of the market to do SIP is mid cap, not large cap, not small cap. The best product to do SIP is mid cap. In fact, in case of White Oak mid cap fund, we take only SIP. We don't take lump sum. हम लोग लेते खाली SIP और STP है, हम लोग lump sum लेते ही नहीं है. But what does this data actually show? The data shows that if you are doing SIP, which day of the month, frequency, वो सब important नहीं है. But yes, definitely it shows that the performance of mid cap is much better for SIP as compared to large cap or small cap. Then you see what is the ideal time horizon. Anything more than 8 years plus is the ideal time horizon. Because आप देखिए इसमें क्या दिखता है आपको. It clearly shows that if you invest 3-year SIP, it is possible you get negative return. If you do 5-year SIP, it is possible. I mean, 3-year SIP, 83% of the time is positive return. 5-year SIP, 91% of the time is positive return. But the moment you do 10 years and all, it is always giving positive return. In fact, if you have done a 10-year SIP, then 94% of the times it has given more than 10% return. So I think higher, longer, meaning कोई भी डेट पिकअप करिए, प्रिफरेबली मिड कैप करिए, एंड डू 10 years plus, it will always give positive return. और 10 years plus SIP, I already told you, इनफैक्ट 10 years plus SIP में सबसे बढ़िया बात क्या है कि पहले 3 साल, पहले 5 साल अगर आपका रिटर्न नहीं आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोअर एंड लोअर लेवल पे यू विल बी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी, एंड देन व्हेन द मार्केट गोज अप, it will benefit you disproportionately. So these are few important data points I wanted to share with you about SIP. It's perfectly, I understand that it is easy for me to say, difficult for you to believe and implement, but I think you should not worry because last couple of years what has happened. In fact, you should increase your SIP commitment. Even if you are not able to increase, at least you should continue doing what you are doing. And if you haven't got good return in last 2 years, it only means that the probability of you getting very high return in future, probability actually goes up. So I think from these levels, we are going to make handsome returns in our SIPs. You should see how you can increase your SIP. Don't bother about which day of the month, which frequency. Those things don't add any value. Definitely, it adds value only in 2 ways. One, if you add mid cap, if you can tolerate volatility, and if you do mid cap, that adds a lot of value. And if you're 10 years plus, it adds a lot of value. And when you do 10-year SIP, if you get less return in the first few years, then your ultimate 10-year return is going to be higher than what you would have got. So that's why I wanted to share with you. Stay
play, stay on the pitch, keep the ball in the court. Thank you for listening me out. I'll invite back Vimal Bhai to take the proceedings forward. Thank you, Ashish sir, for a very wonderful presentation. I think this was one of the most innovative presentation we had so far. Uh, in India, sports is a favorite, and cricket is one of the favorite game. And you have linked SIP with cricket is one of the best part. In fact, my takeaway is game में रहेंगे तो जीतेंगे and make volatility your best friend. SIP के लिए तो volatility is the best friend. But there are a few questions, sir, which our investors are curious to know. एक क्वेश्चन आया है सर कि SIP तो हम कर रहे हैं since quite a long time, but is there anything अगर कुछ any frequency in which we can change the SIP funds? अगर कोई funds अच्छा नहीं कर रहा है तो वो fund को कब change करना चाहिए? और we should continue it for 10 years उसके अंदर, ऐसा कुछ है? ये सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए, विशाल भाई को देना चाहिए. But yes, I agree that if a fund doesn't perform, I think 3 years is a good time frame. अगर 3-4 साल में रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि क्या है कि देखिए हमारे यहाँ पे एक चीज है, आई टेल यू 2-3 थिंग्स. वन इज दैट ऐसा होता है कि जो 2015-17-18 में परफॉर्म किया वो 19-20 में नहीं किया, जो 19-20 में किया वो 21-22 में परफॉर्म नहीं किया, और अभी जो 21-22 में परफॉर्म किया है वो पहले 7-8 साल एकदम डब्बे में था, क्योंकि सडनली PSU वगैरह चलने लगा, राइट? तो ऐसा होता है कि हर दूसरे तीसरे साल बेस्ट परफॉर्मर चेंज होता है. दैट्स अ रियलिटी. बट आई वुड से दैट at White Oak what we aim for more consistency. तो एकदम नंबर 1 हो जाएगा फिर एकदम बॉटम हो जाएगा, वैसा नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी रन ब्रॉड पोर्टफोलियो. सो आई थिंक यू शुड लुक फॉर कंसिस्टेंसी. बट विमल भाई, व्हाट आई वुड से इज दैट यस, आई थिंक हर 3 महीने हर 6 महीने में कंक्लूजन करेंगे कि ये अच्छा है ये खराब है तो कभी रिटर्न नहीं बनेगा. बट डेफिनेटली अगर आप 3-4 साल होल्ड करते हैं और फिर भी आपको लगता है कि 3-4 साल में ऐसा मौका ही नहीं है जहाँ पे रिटर्न बना है, then you should definitely review and you should change it. But I would say that Safe Invest, you are all wealth managers and advisors, so Safe Invest team can do better job of this compared to people like me. Thank you, sir. एक और क्वेश्चन है. ही इज आस्किंग के SIPs में तो चलो हमने 5 years तक किया इन्वेस्टमेंट, बट देयर इज सब्सटेंशियल गेन उसमें. तो is there anything wherein we should book profits in SIP में रेगुलर प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए या फिर उसको चलना चाहिए for 10 years 15 years तक? नहीं, चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप छेड़छाड़ करेंगे. देखिए क्या होता है, प्रॉफिट बुक करने में कोई गलत नहीं है, प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आप कुछ एसेट खरीदने वाले हैं या डाइवर्सिफाई करने वाले हैं तो आपका फायदा होगा. लेकिन प्रॉफिट बुक करके अगर आप साइड पे रुकेंगे और बोलेंगे अभी लोअर लेवल में फिर से एंटर करने वाले हैं, वो नहीं होएगा. दैट इज wishful thinking. It doesn't happen that way. So even if you do profit booking, then you can remove some money, put it in a balance advantage fund, remove some money, park it in a debt fund, and if market falls you re-enter. ऐसा सब चीज कर सकते हैं, but it needs again guidance from a wealth manager like Safe Invest. It needs guidance. And secondly, if you don't need the money, if you are not going to diversify, if you are not going to build any asset, and you उसमें फिर re-entry का timing में आपका गड़बड़ हो जाएगा. So if you don't need the money, it is better to remain invested. So I think stay invested is the only mantra, I think, not to change the. अभी देखिए आज की तारीख में, अभी पिछले 5 साल में SIP में बहुत रिटर्न बना है समझो, लेकिन मार्केट सस्ता है. आप सोचिए, मार्केट सस्ता है. टुडे मार्केट इज क्वाइट अट्रैक्टिव. आप देखिए, अगर आप जो लोग टेक्निकली फॉलो करते हैं, एरिथमेटिक फॉलो करते हैं, मार्केट का ट्रेलिंग पी, फॉरगेट फॉरवर्ड पी मल्टीपल, ये जो मैंने डेटा दिखा है ना कि 33% चीपर, ये अभी का है. फॉरवर्ड लुकिंग इसमें कुछ नहीं है. आज मार्केट का 31 मार्च 2023 का अर्निंग देखेंगे तो मार्केट का पी मल्टीपल 20 के नीचे है, और अगर आप 31 मार्च 2024 का देखेंगे तो मार्केट का पी मल्टीपल 18 के नीचे है. सो मार्केट इज एक्चुअली चीप. और हम लोग तो, मैंने 2-3 बार बोला कि पी मल्टीपल में EPS नहीं देखते हैं, फ्री कैश फ्लो देखते हैं. तो हमारा पोर्टफोलियो तो इट इज even cheaper. So I think this is not a time to
अगर आपका पास का रिटर्न कितना भी अच्छा है, दिस इज नॉट अ टाइम टू बुक प्रॉफिट, दिस इज अ टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट मोर, बिकॉज रिटर्न देने के बाद भी अभी भी मार्केट सस्ता है। और अपना मार्केट सस्ता क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन है वो अपने प्रॉब्लम के लिए नहीं है। वो यूएस में एक बैंक डूब गया तो अपना निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया। वो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यूक्रेन में, वी आर नॉट डायरेक्टली impacted बाय ऑल दीज थिंग्स, बट आवर मार्केट इज करेक्टिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो बाहर के चैलेंजेस की वजह से अगर अपना मार्केट सस्ता हो गया तो उसका अपने को फायदा उठाना चाहिए। True, very rightly said. Uh, there is one more question. The gentleman is asking, do you suggest SIP in any gold funds or any commodity fund to take the advantage of the volatility? सी गोल्ड एक्चुअली क्या होता है, इफ द मार्केट गोज डाउन देन गोल्ड गिव्स यू डाउनसाइड प्रोटेक्शन, राइट? सो गोल्ड हैज ए इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट अभी समझो मार्केट ये अभी 17,000 निफ्टी मैं बोल रहा हूँ सस्ता है, समझो बाहर से कुछ खराब आता है और सस्ता हो जाएगा, समझो मार्केट 10-15% गिरेगा, समझो एग्जाम्पल। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा क्या फायदा होता है गोल्ड से, कि जब मार्केट गिरता है ना, तो आप गोल्ड में से पैसा इक्विटी में डाल सकते हो, right? So I think these are some advantages that it gives you. It reduces the volatility and it gives you downside protection. And when things goes bad, it also allows you to switch from gold into equity. So I think this is something which is the benefit of having gold in the portfolio. But that is just a asset allocation. Gold में SIP करना अभी I don't think that is advisable. I think your SIP should be in equity only. Okay, fine. So you rightly said कि SIP का जो आपने एक स्लाइड शो किया जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में SIP का क्या रिटर्न्स है इन लास्ट 10 Yes. years. बट देर इज वन पर्सन आस्किंग के डू यू सजेस्ट सेक्टरल फंड्स? आईटी का तो काफी टाइम से देख रहे कि है बूम, बीच में डाउनफॉल भी है, लेकिन आईटी इज द एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसमें एसआईपी इज इट सजेस्टेड? आईटी और Not, I'm not. सेक्टरल फंड्स में? No, I am not in favor of doing sectoral funds SIPs. आई ओके, थिंक सेक्टर में नहीं करना चाहिए। मार्केट कैप में अगर बोले तो मैंने जैसे बताया मिड कैप में करना चाहिए। सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है कि अगर आप 2-3 साल एक सेक्टर अच्छा चलता है, अभी आप 2022 का साल पूरा देख लीजिए, बैंक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बट बैंकिंग सेक्टर नहीं चला। और वो जब से वॉर हुआ, आईटी का भी फंडामेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आईटी का सेक्टर 25% डाउन है। So what happens is that when you're in a sectoral fund, you might get trapped because of some other developments, and it's better. It's quite risky. जो लोग SIP करते हैं, that is being done with a long-term perspective. What I'm seeing is that the sectoral funds can be quite risky, and they can behave quite in a quite unexpected manner. SIP is done by people who are doing long-term planning. So it is better that they are in a diversified fund. And if you have to take risk, then at best you should just do into this one. Like I said, mid cap. we have one more question. He says that we understand that we need to be invested, then when and what should be the time to optimize the investment amount? Optimize meaning today is a time to increase the amount. That is how I would say. Okay. So during a market corrections, he should definitely increase the When the market investment. is cheap. Yeah, when you do STPs and all, we have this flex STP and all these things. What does it do? You're investing every month or you're investing regularly. But what happens is that when the index level or when the market becomes cheap, you increase your SIP amount. And when market becomes expensive, you reduce it. So that much optimization or calibration you can do. And today is a time to actually increase it. That's what I would say. So can you throw some light on the SIP top-up utility? Do you recommend that should be used? See, I think it is a best way to do. It's about being disciplined. देखिए क्या है कि अगर 2-3 चीज़ें होती है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं, अगर अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं, तो योर एबिलिटी टू इन्वेस्ट माइट गो अप. And secondly, of course, your income can go up. If you are running a company, sometime your
turnover can go up, your profitability can go up. If you're a salaried individual, hopefully once in a year, at the end of the year in April, your salary also could go up. So basic point is that whenever your income goes up, you have ability to save more. So ideally तो हर साल आपका SIP का अमाउंट 10-12% बढ़ना चाहिए. तो SIP टॉपअप से क्या होता है कि ऑटोमेटिक बेसिस पे समझो आज आपने 10,000 का SIP रजिस्टर किया है तो 12 महीने 10,000 चलेगा, अगले साल अप्रैल से वो 10 के बदले 11,000 हो जाएगा. So SIP top-up is a highly recommended feature because it increases your SIP installment every year in a disciplined fashion, and you don't need to review it, or sometimes we forget about it. Sometimes we don't have discipline. So it is better to register an SIP with a top-up and predetermined कि भाई हर साल 10% बढ़ा देगा. So it's a very very good way to ensure the discipline. और आगे जाके ये सब चीज है, इसी से बड़ा रिटर्न बनता है एक्चुअली आपका, क्योंकि सेविंग भी बढ़ रहा है और वो हायर सेविंग के ऊपर आपका फिर रिटर्न आएगा. Okay. Very well said, sir. Fine, sir. I think most of the questions you have addressed, and thanks a lot, sir. Thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you everyone. Thanks to all the guests of Safe Invest. Thank you.